तालिबान अफगान सत्ता पर काबिज हो गया है, लेकिन पंजशीर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। ये वो इलाका है जिसे तालिबान कभी नहीं जीत सका। इस बार तालिबान ने काबुल पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन अभी तक वो पंजशीर के अभेद्य किले को भेद नहीं पाया है। एंटी तालिबान फोर्स के नेता और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहेल तालिबान के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी चैनल WION के एग्जीक्यूटिव एडिटर पलकी शर्मा उपाध्याय ने, आपको सुनाते हैं। So my first question to you is, how are you doing? And I've heard reports that you were also offered asylum by many countries and help, but you decided to stay in Afghanistan, and you were even reported as saying that you would much rather die in your country than leave. Is that correct? Why did you not leave if you had the option? Well, I think for a person of my stature and history and likes of me who prefer to escape or go to exile, this would be disgrace. It will be a historic shame. For years and years, we kept telling our people that this is a noble cause, that you are sacrificing your lives and you are giving so much sacrifice for the cause of humanity. And when the country is putting our core to the test for us to escape, that would be dishonoring all the sacrifices of the Afghan people, and therefore I did not want to be part of that disgrace, part of that humiliation, and part of that historic shame. I am with the Afghan people, I am inside Afghanistan, I am in my soil, and I share the pain, I share the frustration, I share every hardship that the Afghans are facing. Not necessarily as much as those who are now under the Taliban tyrannical control. We are still in the free part of Afghanistan. Yes, absolutely, you are right. I was offered evacuation. I was offered chartered flights by friendly countries, and I refused. अमरुल्लाह साफ तौर पर बातचीत में ये कह रहे हैं कि अगर वो वहाँ से सुरक्षित निकल जाते, जो अफगान के लोग हैं उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसका ये अपमान होता, और हमने जीवन भर जो ये सिखाया कि नेक काम हमें करना है और मानवता के लिए जीवन को समर्पित करना है, तो फिर हम वही कर रहे हैं। पूरा इंटरव्यू आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि पंजशीर पर कब्जा करना मुश्किल क्यों है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी हिंदू कुश के पहाड़ों के करीब है। उत्तर में पंजशीर नदी इसे अलग करती है। पंजशीर का उत्तरी इलाका पंजशीर की पहाड़ियों से भी घिरा है। वहीं दक्षिण में कुल्हिस्तान की पहाड़ियां इस घाटी को घेरे हुए हैं। ये पहाड़ियां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पंजशीर घाटी का इलाका कितना दुर्गम है। इस इलाके को भूगोल ही दुश्मन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। साथ ही मध्यकाल में ये घाटी चांदी के खनन के लिए मशहूर रही। अब आपको सुनाते हैं इस इंटरव्यू का दूसरा भाग कि अमरुल्लाह ने और अपनी बातचीत में अपनी बातों को कैसे रखा है। Do you see the exit of President Ghani as a betrayal? I would say if he has stayed with the nation, and if he has stayed with the soil, and if he honored his word, it would have been much, much better, both for him, for his legacy, and for the Afghan people. A few days before the collapse of Kabul, he said, I am a fan of King Amrullah, the king who regained our independence from the British, but at times of difficulty and insurgency, he left the country, he left us alone, and that's a stain in our history. I think with his escape and fleeing the country, he shattered whatever positivity was about his image and what he was trying to do. At the right moment, he did not show sense of sacrifice and sense of giving back to the country, back to the soil.
I feel very sorry for that. Let's think of it this way. Even if he was captured by the Taliban, him being a prisoner in the Taliban jail would have been a point of rallying for the Afghan people, a point of outcry by the international community. I don't think his exit from Afghanistan, his escape, has either helped him or those who were around him. They go very dark in history. तो सुनाओ आपने, जब अमरुल्लाह सालेह से पूछा गया कि अशरफ गनी के भाग जाने को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये काला अध्याय है। अगर वो अपनी मिट्टी से जुड़े होते, अपने लोगों से जुड़े होते, अपने मुल्क से जुड़े होते, तो वो ये कभी नहीं करते। उनकी सकारात्मक छवि के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग ये लग चुका है। वहीं तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान के हर बड़े शहर पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अभी भी तालिबान का एक ऐसा इलाका जहां तालिबान न तो अभी घुस पाया है और न आज से 20 साल पहले घुस पाया था, वो इलाका है पंजशीर घाटी। पंजशीर, जिसे गुलामी नहीं पसंद है, काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। ये काबुल से 3 घंटे की दूरी पर है पंजशीर। 1996 में तालिबानी इस पर कब्जा नहीं कर पाए थे। सोवियत संघ के फौजी भी इस पर कब्जा नहीं कर पाए थे, असफल रहे। अहमद शाह मसूद का गढ़ था पंजशीर। 1995 में अहमद शाह मसूद ने तालिबान को हराया था। शाह मसूद ने तालिबान को काबुल से भगा दिया था। 9/11 हमले से 2 दिन पहले शाह मसूद की हत्या हुई थी। अब शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ये जंग लड़ रहे हैं। पंजशीर, जिसे गुलामी पसंद नहीं है, उस पर तालिबानियों के लिए कितना बड़ा खतरा है, आप इसे समझिए। अब आपको इस इंटरव्यू का तीसरा भाग सुनाते हैं। So you do see this as a betrayal? You know, it was not a betrayal by him only. If you look at the entirety of this picture or what is unfolding, the Afghan nation is facing a betrayal by the whole international community. No country stood by its word. We have been in forefront of defending global security. We have been defending rights and values, and we have been said time and again for years and years that the backing will be unwavered. It is very unfair these days to see they are saying that the Afghans did not fight. That is the most ridiculous statement. That's the most ridiculous and nonsense description of the Afghan forces. They bravely fought. They were not well led. And the negotiations an hour back with the Taliban in Doha, that was a backstabbing of our forces. It was backstabbing of the American forces. It was backstabbing of all those brave men and women in uniform who served in my country, and particularly the brave Afghan security forces. So I would not put the blame on one individual. It's still early to reflect on what went wrong, but let's be very clear. It was one wrong political judgment which led to this massive tragedy, which is still unfolding. It has not ended. तो एक बहुत बड़ी बात जो अमरुल्लाह सालेह ने अपनी बात में कही, हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही, कि अंतर्राष्ट्रीय समूह से बहुत निराशा हुई। जिसने जो वादा किया वो उस वादे से पलटा और उन्होंने ये होने दिया, इसलिए ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.